हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारा हाई रिच का जो हेयरिंग है लगातार आगे चल रहा है और वही है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। लेकिन अभी जो 11 तारीख को एक हेयरिंग हुआ था, उसका अपडेट क्या है, उसमें क्या प्रोसेस हुआ और किस तरह से उसका नेक्स्ट अभी स्टेप है, वो काम हो रहा है, वो हम सब कुछ जानेंगे। और हमारा रिवाइवल सोसाइटी भी एक बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसको भी हम जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिवाइवल सोसाइटी क्या काम कर रही है और हाई रिच कब तक हमारा कमबैक हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो 11 तारीख का जो केस था, जो हमारे सीईओ जो श्रीना प्रतापन, इनका जो 11 तारीख का देख सकते हैं यहाँ पे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन इनके बेंच में था। और ये जो केस था हमारी तरफ अलाउड करके दिया है और मैडम को बेल मिल चुका था। और बहुत सारे कंडीशन थे जो नॉर्मल कंडीशन थे। और दूसरा जो केस था, इसका केस नंबर था बेल एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं 2232/2025 केस अलाउड करके देख सकते हैं। और हमारा दूसरा जो केस था यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे PMLA जो केस था हमारे प्रतापन का, जो केस का स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे वो जो 19 अप्रैल को था और केस स्टेटस पेंडिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज ऑफ केस रिमांड एक्सटेंडेड। तो ये जो हमारा बेल का जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा बट्स केस का है। तो और हमारा जो एक देखिए यहाँ पे देख सकते हैं PMLA कोर्ट का जो केस था 19 का, इसका जो यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हैं सेम है। फर्स्ट एक्यूज नॉट प्रोड्यूस्ड A2 एंड A34 प्रेजेंटेड, अदर एब्सेंट्स। तो यहाँ पे इनका जो इसको जो एक्सटेंड किया था 19 को था। और उसके बाद हमारे जो और एक केस था जो ट्राइब्यूनल जो दिल्ली का जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो ED का एक केस था, यहाँ पे देख सकते हैं ये केस इसका डेट था मार्च में था 19, इसको ऑर्डर मिला था। यहाँ पे क्या हुआ है उस जो केस में, यहाँ पे हमारे जो ED के जो प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है LD प्रॉक्सी, यहाँ पे काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट प्रेज एंड ग्रांटेड 8 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाई टू द अपील। तो यहाँ पे उन्होंने 8 हफ्ते का टाइम पूछा था, जो डेट था 19 मार्च का। और ये जो ख़त्म होता है 8 मई। तो लिस्ट द मैटर फॉर हियरिंग ऑन 8 मई। तो 8 तारीख को ये चलेगा, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत वक्त ले चुके हैं इन्होंने, और फिर भी टाइम के ऊपर टाइम पूछा जा रहा है और इसको लंबा खींचा जा रहा है। और यही था केसेस का। अभी हमारा जो नेक्स्ट जो केस होगा जो है मई 29 और जून 2 को, जो हमारे इम्पोर्टेंट केसेस हैं। तो बने रहिए, मैं फिर भी आपको और अपडेट देना चाहता हूँ। जो हमारे HCRS जो हाई रिच कम्युनिटी रिवाइवल सोसाइटी के बारे में थोड़ा अपडेट देना था, तो बने रहिए। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि अभी हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, हमने यहाँ पर आपको देने का कोशिश किया। और इसी तरह हमारा हाई रिच रिवाइवल सोसाइटी हमारे लिए काम कर रहा है, उसका अनेकों डिस्ट्रिक्टों में काम हो रहा है, लगातार वो प्रोसेस में है। और उसका एक वीडियो आया है, तो उसको भी आप देखिए, समझिए। और क्योंकि हाई रिच रिवाइवल सोसाइटी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो आप आइए इस वीडियो को देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। നല്ലൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് ഹൈറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിവൈവൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തവർ ഒത്തുചേർന്ന് സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകി. ഹൈറിച്ച് കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ചില ആളുകളുടെ ഗൂഢ ഉദ്ദേശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1.5 വർഷത്തിന് മുകളിലായി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. നല്ലൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നും നല്ലൊരു തൊഴിലിലൂടെ വരുമാനം നേടാമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലും വരുമാനവും മൂലം ധാരാളം ആളുകൾ സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിവൈവൽ സൊസൈറ്റി HCRS എന്ന സംഘടന ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സഹായം നൽകുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോയവരെ കൂടെ നിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനും നിയമപരമായ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിലച്ചുപോയ തൊഴിലും വരുമാനവും വീണ്ടെടുക്കുക, ഹൈറിച്ച് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിയമ നടപടികൾ ഇതിലെ അംഗങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും തളർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ട നിയമസഹായം തേടുകയും ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് HCRSന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം. കമ്പനി നടത്തുന്ന കേസുകളിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് കമ്പനിയുടെ 8 വർഷത്തെ അംഗങ്ങളോടുള്ള നിലപാടും അവരോടുള്ള വിശ്വാസവും കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, കേസിന്റെ കാലതാമസം കാരണം അംഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭീകര പ്രയാസങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ഉദ്ദേശപ്രേരിതമായി കാലതാമസം വരുന്ന നിയമ നടപടികളെ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക, ഹൈറിച്ച് അംഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിൽ, വരുമാനം, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. സംഭവത്തെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി CJ രമേശ് മണ്ണാർക്കാട് പ്രസിഡന്റായും രഞ്ജിമ ഡോളി ചിറ്റൂര് സെക്രട്ടറിയായും ഹരിദാസൻ കാറൽമണ്ണ ട്രഷററായുമുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി. പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ബാരി കാടാമ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ബിനീഷ് കുമാർ തൃശൂർ മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി. അനീഷ് കുമാർ മോങ്ങം അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു. तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हाईरिच रिवाइवल सोसाइटी अपना काम कर रही है और ये लगातार प्रोसेस वहाँ पर आगे बढ़ रहा है. केरल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्टों में इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और लोग इसके साथ भी जुड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं. तो इसी तरह से मीटिंग हो रही है, लगातार इसी तरह से तैयारी हो रही है कि हाईरिच को कमबैक कैसे करवाया जाए. इसके लिए हमेशा मीटिंग तरह तरह की प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार उस पर प्रोसेस चल रहा है. तो आप बस यही है, इस सोसाइटी का उद्देश्य यही है कि ये हमारे कंपनी के फेवर में काम करे. लोगों को जो अलग अलग तरीके से लोग माइंड वॉश करके तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे करके लोगों से गलत गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे करके भड़काते हैं. तो इसके लिए ये हाईरिच रिवाइवल सोसाइटी काम करेगी और सभी को सही इन्फॉर्मेशन देगी, सही तरीके से गाइड करेगी. और तो ये इंडिया के सभी राज्यों में भी ये अपना काम स्टार्ट करेगी. तो इसी तरह से हाईरिच का साथ हम सबको देना है, क्योंकि हाईरिच तो अपने तरह से पूरा एफर्ट लगाए हुए है, पूरा प्रयास कर रही है. बस हम सबको प्रयास करना है, हम हाईरिच को साथ देना है, इतना काम करना है. बाकी हाईरिच अपना जो भी उसका काम है वो पूरा कर रही है. तो हम सब बस इतना ही हाईरिच का सपोर्ट करें, इसके साथ रहें. हाईरिच ज़रूर कमबैक होगी, ये हम सबको उम्मीद है. तो इसी तरह से बने रहिए और अपने हाईरिच के साथ दीजिए. तो चलिए, नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी अपडेट आता है, हम आपको देंगे. और अभी ज़रूर ये हमें लग रहा है कि हाईरिच कमबैक होना मुश्किल है, लेकिन ज़रूर कमबैक होगी. बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए क्योंकि हाईरिच कमबैक हो, क्योंकि ये हमारा मेहनत का पैसा लगा हुआ है और एक ऐसी ईमानदार कंपनी है जो हम सबको बहुत अच्छा इनकम दे रही थी. हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा था यहाँ से. तो ये ज़रूर ये कमबैक होगी. तो आइए, चलिए, नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको देने का प्रयास करेंगे. और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.